भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आंतीर्थ गुरुभ्यो नमः। ब्रह्ममाध्वगौड़ीय परंपरा की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवद्गीता चैतन्य चरितामृता की जय। चारों धाम की जय। चारों वैष्णव संप्रदाय की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री दामोदर मास की जय। कार्तिक मास की जय। श्री शिवतान एकादशी महोत्सव की जय। कार्तिक शुक्ल पक्ष व्रत की जय। गोवर्धन पक्ष की जय। श्री सत्यव्रत मुनि की जय। गुरु परंपरा की जय। गुरुपाद पद्म की जय। युगाचार्य भक्ति वेदांतरांग गोस्वामी गुरुपाद पद्म की जय। भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु की जय। ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. श्री श्री गोपाष्टमी की जय। कार्तिक पूर्णिमा की जय। श्री श्री भीष्म पंचक की जय। So you got 6th chapter, 6th verse. Namo Deva Damodara Ananta Vishnu Prasida Prabho Dukka Jalabdi Magnam Kripadrishti Vrishati Deenam Batanu Gruhanesha Mamagyam Med Akshidrishya. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट. अक्षिदृश्य, कण्णी काणिस्को, हमारे को हमको दर्शन दे दो, हमारा ये साक्षात इस आंख में दर्शन दे दो. अक्षिदृश्य, मेरे सामने प्रकट हो जाओ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ದರ್ಶನ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಅಕ್ಷಿದೃಶ್ಯ, even though I am ಮಾಮಗ್ಯಂ, I am ignorant person, but still you are Damodara, you are ಭಕ್ತವತ್ಸಲತಾ, you are very affectionate. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಆ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೇಲಲ್ಲ, not on the basis of my qualification, but you are Damodara, that's why I'm begging you for the Akshidrishya, Kripa Drishti. Kripa Drishti ka barish, the rain of Kripa Drishti. Kripa Drishti Vrishati Dinam Batanu. Kripa Drishti ka varsha, Kripa, the rain of Kripa Drishti. That is what I mean, right? So, Nam Sankirtan, in that Nam Sankirtan, you should include the name Damodara. Because Damodara is a Bhaktavatsala name. And quickly you will get Siddhi. Namo Deva Damodara. And then Deva. Deva means जो क्रीड़ा करते हैं. सब कुछ खेल है भगवान के लिए. Nothing for भगवान. Nothing is serious thing. सब कुछ खेल है. हंसते हंसते खेलते हैं. पूरा दुनिया खेल है. सृष्टि का खेल चलता है. इसलिए देवा बोलते हैं उनको. दिव्य खेल रचाते हैं. लीला रचाते हैं, तो खेल रचाते हैं, उसी को देवा बोलते हैं. नमो देव दामोदरा अनंत विष्णु, जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कृपा है और हर जगह है. आप ये नहीं कि आप कोई और आप प्रार्थना करेंगे, ये नहीं कि वो कोई और बैठे हैं साहब, उसको हर अणोरणीयान महतोमयान. विष्णु मीन्स हर जगह है, व्याप्त है. जैसे मोबाइल का ये जो सिग्नल हर जगह है ना, जिसको पास मोबाइल है वो कैप्चर कर सकता है, वरना तो दिखे अरे कहाँ बातचीत हो रहा है, हवा में हो रहा है बातचीत, ये बातचीत जा रहा है हवा में सिग्नल की तरफ, लेकिन जो डिवाइस है वो विष्णु हर जगह है. जो प्रहलाद जी क्या कर सकते थे, प्रहलाद जी वो मोबाइल फ़ोन था उनका, तो नरसिम्हा अवतार पर के प्रकट हो गए. देखो यही चीज़ है ना. तो जो प्रभुपाद जी जो हमको जो प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस का है कि हर जगह जो वस्तु है विष्णु वस्तु, उसको प्रकट हो जाए, और हर जगह जो वस्तु है पहले उससे संपर्क हो जाए. जो संपर्क है ऑलरेडी वो भूल चुके. सो दैट इज हैप्पीनेस, यू नो, दैट कनेक्शन वी हैव टुवर्ड्स ऑल परवेडिंग विष्णु. और कनेक्शन को याद रखने से, याद करने से आपको आनंद का शुरू हो जाता है, सच्चिदानंद, श्रद्धा, और इससे आनंद रही नहीं. वो भूल चुके हैं, बाहर चीज से संपर्क हो गया. ये जो कलयुग का जो है बाहर चीज, जो अंदर का बात है, हम लोग का जो कांटेक्ट है विष्णु के साथ,
उसको याद करना पड़ेगा, वो पूरा उसमें धूल पड़ गया हो. दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. जैसे सम वस्तु नो, यू आर सर्चिंग एंड बहुत पुराना किताब पूरा धूल पड़ा हुआ, बाद में उसको मिल जाता है, आपको किसी तरह वो मिल जाता है, वो सफाई. ऐसे हमारा जो कनेक्शन ऑलरेडी हर जीव का, हर चीज का विष्णु के साथ संबंध है. और जो हर चीज को विष्णु के संबंध से देखता है ना, उसका लाइफ आनंद हो जाता है. कुछ ज्यादा करने की, बहुत सिंपल ही है प्रोसेस. जो ऑलरेडी है उसको अक्नॉलेज करो. इसे वही श्रद्धा है ना, अक्नॉलेज करो कि मेरा कनेक्शन है विष्णु के साथ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನಕದಾಸರು, ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ हरि निन्न चरणಗಳ. कोई उसको छोड़ के रह सकता है क्या? सब कुछ तो वही है. विश्वम, मैं ही पूरा विश्व हूं. तो कैसे कि सब कुछ छोड़ के रह सकता है, लेकिन विष्णु को छोड़ के कोई नहीं रह सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी है, उनमें ही है. तो फुलिशनेस, दैट इज इग्नोरेंस, दैट इज नॉलेज. जो माता पिता, जो रिलेटिव्स, वो सब विष्णु का ही बना हुआ है ना. सब आत्मा उनका है, सब कुछ विष्णु है. एक तरफ से आप बोल सकते हैं, इसलिए तू ही माता, तू ही पिता, तू ही सर्व, वो बोलते हैं ना उसमें, नारद मुनि बजाए बिना. So all this is important, we have to raise our consciousness. Krishna consciousness means we have to start seeing differently. So this is what now Satyavrati Muni is telling in 6th text, Akshi Drishyaha. His forehead is, Deva means his form is divine. Divya, that is not made of, what is Divya? Divya means which is not made up of सत्वगुण रजगुण तमगुण. जो सत्वगुण रजगुण तमगुण से नहीं बना है उसको दिव्य बोलते हैं, गुणातीत वस्तु. और दिव्य ही आनंद वस्तु है. For real happiness we have to cross the three modes. Three modes के ऊपरी वाला जब हम पहुंचेंगे तभी तो निज सुख का अनुभूति होगा. निज सुख का अनुभूति कैसे होगा? त्रिगुण से ऊपर ब्रह्म भूयाय कल्पते, त्रिगुणान समुदित्यैताम ब्रह्म भूयाय कल्पते. So all these are very scientific, logical methods, right? His forehead is decorated with musk tilaka. Kaustuba Jival. This is very important shloka also Gurudev used to recite before the class. Kasturi Tilakam. This is also a meditation shloka. If you want to meditate on the form of the Lord, how will you meditate on the form of the Lord? By this shloka. Such kind of shlokas you have to memorize, and as you chant, you have to keep on imagining. Or as you chant, the form will manifest. Kasturi Tilakam Lalatapatale Vakshastale Kaustubam. The Kaustuba jewel rests upon his broad chest. Then you have to see the images of Kaustuba jewel. Now because of Google, you can at least get a view of how the Kaustuba jewel will look like. All these are needed for meditation, Kasturi Tilakam Lalatapatale Vakshastale Kaustubam. Lalat में क्या है? कस्तूरी तिलक है. और कौस्तुभ जल, an exhibit pearl hangs from the tips of his nose. नासा अग्रे वरमौक्तिकम. नासा, नासा मतलब नासिका, नासिका मतलब नोस. वरमौक्तिकम करतले वेणु. ಕೈಯಲ್ಲೇನಿದೆ ವೇಣು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಕರತಲೆ ವೇಣು. And when you start to try to do the meditation on Rupa Dhyan, and with this word Karatale Venu, then this word will paint the remaining, whatever you are lacking. That is the power of this shloka. हर श्लोका में शक्ति होता है, इसमें रूप शक्ति है. इस श्लोक से रूप प्रकट होता है आपका. ये श्लोक क्या करता है? ये श्लोक टेलीकास्ट करता है आपके हृदय में, रूप को चित्रण बना देता है. इतना शक्ति है. लेकिन इस श्लोक का सेवा करना पड़ेगा. हाउ डू यू सर्व दिस श्लोका? बाय मेमोराइजिंग, बाय चैंटिंग डेली, बाय मेडिटेटिंग ऑन दिस श्लोका, बाय नोइंग द मीनिंग्स. Then you are serving the shloka, then this Gopala Sahasranama Stotra will be pleased. Oh, Vasudeva Prabhu is doing very good memorizing, he's trying to understand. Then that it will paint the Rupa in your heart. You please experience. Karatale Venu, Kare Kankanam, Karatale Venu. Kankana is the bracelets. His entire form is anointed with Chandana. Sarvange Hari Chandanam. Sulalitam Kante cha Muktavali. ಕಂಠದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಗ್ರೇಸಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನೆಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕಂಠೇಶ ಮುಕ್ತಾವಳಿ ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ. He is surrounded by the gopikas. All glories to the crest level of the gopas. ಗೋಪಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ. ಗೋಪಾ ಸ್ತ್ರೀ, ಗೋಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇದು, ಬರೀ ಗೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ ಬ್ರಜ ಗೋಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಗೋಪಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ವಿಜಯತೆ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ. हो गया ना आपका मेडिटेशन. बहुत सुंदर है ये श्लोक मेडिटेशन के लिए. मेडिटेशन ಹಾಂ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. Anyone, all of this you have to keep on. Which shloka will show mercy to you, you don't know. ಎಲ್ಲದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರು ರೂಪಧ್ಯಾನದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿ. ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರಂ ಮಧುರಂ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ರೂಪದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಏ ಶ್ಲೋಕ ಮುಜೆ ಅಚ್ಚ ಲಗ್ತಾ, ಇದು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಸಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುರುದೇವ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಹುತ್ ಜಾದ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೇಣು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಜಿವೆಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಟು ಎವ್ರಿ ಶ್ಲೋಕ. ರೂಪಧ್ಯಾನ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೂಪಧ್ಯಾನ ಆದಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾಮ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ರೂಪಧ್ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ರೂಪನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ surrounded by the young ladies of Vraja is most beautiful and enchanting. ಗೋಪಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ನೋಡಿ, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಸ್ಕಾನ್ ಪೇಂಟಿಂಗು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಷ್ಟಸಖೀಸ್ ಅವರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಲಲಿತಾ, ವಿಶಾಖ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗೋಪೀಸ್. ಅದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. रूप भी डिसेंड होता है ना, नाम जैसे डिपेंड होता है, रूप also has to descend. When we try to meditate, the rupa will descend and give you the clarity. If the rupa is pleased by us and the shloka is pleased by us, the rupa will descend in our heart like nama descends. We go on trying to chant, no? Like that we go on trying to do the little dhyanam, smaranam. Mother Yashoda has bound Deva Shri Krishna. She wrapped a rope around his waist. She wrapped a rope around his waist, brought it to behind his back and tied it to the grinding mortar. Bhakti Baddham has bound Deva. She wrapped a rope around his waist, brought it behind his back and tied it to the grinding mortar. Uluk, we have seen the masala. It is nothing but आपको छोटा वाला मसाला का मिलता है ना आजकल, वो जो ये सब कूटने के लिए मसाला कूटने के लिए लवंगा ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. आजकल तो आप लोग मार्केट से ले लेते होंगे वो गरम मसाला वगैरह. पहले तो क्या होता था, वो भी बनाते थे घर में. सिर्फ रॉ मटेरियल मिलता था नेचर से जो है. कलयुग में ये सब शुरू हुआ, पाउडर बनाना, और उसके साथ मिलावट शुरू हो गया. पहले क्या होता था, टर्मरिक चाहिए. देखो टर्मरिक इतना पावरफुल है, आजकल हम लोग सब में हल्दी डाल रहे हैं, लेकिन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एमटीआर का जो मिलावट हल्दी है. यू ब्रिंग द असली, आप ये उसको ಬೇರೆನೇ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, हल्दीದು ಬೇರೆನೇ ತೊಗೊಂಡು 90% डिजीज़ खत्म हो जाता है. हल्दी और दूध आप अच्छा खाइए, मतलब दूध को भी अच्छा, जो देसी गाय का दूध अगर कहीं मिला तो आपका लाइफ बन जाता है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता. और हल्दी, ये पैकेट वाला हल्दी बंद करना चाहिए. तो ये क्या हो गया, पैकेट वाला हल्दी में सब. हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ। हम्म। वही एग्जैक्टली। हम्म हम्म। वेरी गुड। या सरसों का तेल आजकल भी यू नाउ यू आर गेटिंग कोल्ड प्रेस, जो गनी में बनाते हैं वही मिल रहा है। तो वो लीजिए कच्चे, डोंट टेक द मार्केटिंग मार्केटिंग बॉटल में। अच्छा हुआ तो कोल्ड प्रेस जो है प्रेस करते हैं, प्रेस करके निकालते हैं, वरना तो ये लोग उबाल उबाल के क्या क्या तो करते हैं, वो तो पानी है, वो केमिकल है बस। तो तेल वो बोलते हैं, वो राजीव दीक्षित करके मेडे आयुर्वेदिक, ही वॉज मर्डर्ड एक्चुअली, वेरी फेमस आयुर्वेदिक, आईआईटी में पास आउट, देन ही प्रोपगेटेड आयुर्वेद। बोलते हैं तेल ठीक करो, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका तेल ठीक कर लो। तेल मतलब जो गनी में बना है, जो वुड वाला, वुडन 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 इसमें बना है। ये रिफाइंड विफाइंड बंद करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल इज द बिगेस्ट स्कैम। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इज वेरी गुड, नेचुरल ऑयल, जो जहाँ वो ग्रेन का स्मेल होना चाहिए। So no heart problem. Heart blockages will be cleaned by the fiber inside that. Go groundnut oil. Nowadays you are getting. At least I am buying from cold pressed. Coconut oil is so powerful. Cold pressed, virgin coconut oil. सरसों का तेल इन विंटर सीजन वेरी गुड। बॉडी मसाज करके रखो, इतना गर्मी रहता है बॉडी में, आपको कहीं बॉम्बे में आपको ज़रूरत नहीं होगा। तो जहाँ ठंड पड़ता है, इन बैंगलोर नाउ यू गेट लिटिल बिट कोल्ड। सो ये, हाँ हाँ हाँ। सी आपका, नहीं नहीं, कोकोनट तो साउथ में चाहिए। हाँ। नॉर्थ में भी समर में कोकोनट अच्छा है, पित्त कम करता है, पित्त। आपको सिर में इसलिए बाल में लगाते हैं क्योंकि ये ठंडा हो जाता है दिमाग। अगर आपका बहुत टेंशन चल रहा है कुछ, यू अप्लाई नाइस कोकोनट ऑयल, आपको देखो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इट विल अब्जॉर्ब द पित्त और वात। वात से क्या होता है ना, हमारा थॉट्स बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ये सोचो वो सोचो। इफ़ यू पुट नाइस कोकोनट ऑयल टू द हेड, ठंडा हो जाता है, सब सब धीमा हो जाता है। So coconut oil is kalpataru. Coconut oil is good in summer. In winter and rainy season, जुकाम again all mustard oil. मस्टर्ड ऑयल रामदेव बाबा भी बोलते हैं ना, वो वर्क भी करता है। मैं देखा साइनस अगर सिर भारी हो रहा है तो नोस्ट्रिल्स में थोड़ा, दो फिंगर्स को आप, यू डिप इन द मस्टर्ड ऑयल एंड टेक द ब्रेथ, ಹಿಂಗೆ ನಶ್ಯ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, immediately you will get relax of the heavy headedness, the sinus problem. And then you can apply throat pain, you can apply mustard oil to your throat. बहुत गर्म है ना वो, बहुत गर्म है, लेकिन if you apply more you will get blisters in the tongue. आपको हुन्ना उड़ता है कहीं, but if somebody's body is very cold, frequently you're getting cold and all, apply to the pada, feet, while sleeping. The bottom of the feet is very powerful area, all the nerves will be there. You apply the mustard oil, you'll start feeling body heat after 2 hours, very powerful. You can apply to the chest, massage, and then 5-10 minutes you apply and take bath in the morning. That's also very good. Anyway, so we are digressing, but then this is very good, grinding mortar. So the deva, so turmeric, we have to correct our turmeric, दूध and oil, then सब कुछ ठीक हो जाता है। कलियुग डिस्ट्रॉयड, पहले मैदा लाया, सब कुछ फाइबर निकाल दिया ग्रेन्स में से, मैदा और वाइट राइस। देन कलियुग अटैक्ट सॉल्ट, वो जो आयोडीन सॉल्ट है ना, उसका बीपी बढ़ता है। देन इट रिमूव दैट सेंधा नमक, सेंधा नमक इज़ वेरी हेल्थी, इट विल बैलेंस योर वाता पित्त कफ। देन इट रिमूव द ऑयल, ऑयल को ख़राब किया, सब कुछ ये 3 एरिया में ख़राब किया ना, सबका बिगड़ गया। पाम ऑयल लाया, पाम ऑयल से ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, जाके एवरीथिंग विल गेट स्ट्रक इन दी ब्लड वेजल। सो ऑल द बिस्किट्स, यू सी द कंटेंट्स, ऑल द बिस्किट्स, ऑल हल्दीराम, ये जो बनाते हैं भुजिया से वगैरह, ऑल पाम ऑयल। कितना चीप मिलता है, मलेशिया से आता है, एंड देयर स्पॉइलिंग द हेल्थ ऑफ सो मेनी पीपल, एंड ऑल द आउटसाइड पीपल दे फ्राई इन पाम ऑयल, इज ऑल दिस इडली वड़ा एंड ऑल. So if you are eat a nice fried food, bring nice oil. Virgin coconut oil frying is very healthy. They make it in the home.
You enjoy nice fried food. It will not destroy your heart. But outside, one is. So Deva can also mean he who is playing. In other words, this pastime, Sri Krishna is playing in the form of a child. Deva means जो क्रीड़ा करते हैं, दिविक क्रीड़ा इति देवः. देवा मीन्स उसको टेंशन नहीं रहता ना, कौन क्रीड़ा कर सकता है, हमेशा क्रीड़ा में हमेशा खेल रहा है लाइफ में, तो क्या कौन है जिसको टेंशन नहीं है, जिसको सब कंट्रोल में. तो इसलिए व्हेन वी वर्शिप देवा वी आल्सो हैव टू बिकम लाइक दैट. प्रभुपाद सेड प्रसन्नात्मा, प्रसन्नात्मा जो है क्रीड़ा करता है ना, हमको हमारा भी नेचर मद्भावम आगतः. भगवद गीता कृष्णा से सो मेनी टाइम्स यू विल अटेन माय नेचर. व्हाट इज द नेचर? प्लेफुल नेचर. देवा यू बिकम प्लेफुल. प्लेफुल जो बच्चा देखा खेलते हुए, वो कल के बारे में नहीं सोचता है, परसों के बारे में नहीं सोचता है, yesterday what happened, tomorrow what happened. The child is not concerned. That is ದೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು, ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಥರ ಅಂದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ ನೇಚರ್. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ದೇವಂತರ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. राइट. सो दिस कल आज और कल यही प्रॉब्लम है, मन हमेशा घूमता रहता है. सो देवा, लेट्स वर्शिप द देवा. व्हेन वी वर्शिप देवा वी गेट हिज नेचर. हु डजंट वांट? वी हमेशा खेल के मस्त रहो भाई. दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. कृष्ण कॉन्शियस नॉट सम ये सब नहीं. यू हैव टू अटेन द कृष्णा's नेचर ऑफ प्लेफुल नेचर. यू विल आल्सो बिकम प्लेफुल. ऑल द सखास दे आर ऑलवेज प्लेफुल. कोई टेंशन नहीं. वो डेंजर है, डेंजर से भी खेलते हैं. वो कालिया में बोला डेंजर है, वो कालिया के साथ भी खेलते हैं. उधर अगासुर बोला डेंजर है, वो केव में मत जाओ, गुफा में, वही भी जाते हैं, खेलते हैं. एवरीथिंग इज खेल फॉर देम बिकॉज दे आर हैव अटेन्ड कृष्णा's नेचर. Devotee is not very serious and always funny. Even he is very joyful. Prabhupada is very joyful. So Satyavata Muni therefore says, I want to see the divine beauty of this Gopala who appeared as a little child directly with my own eyes. Akshidrishyaha. देखो डिजायर, डिवोटी मीन्स हाई क्वालिटी डिजायर. आपको देखना चाहता हूँ, ये डिजायर. ये नहीं कि अरे मुझे वो बंगला बनाना है, ये बनाना है, वो लो क्लास डिजायर. अक्षी दृश्य, हाँ, मैं आंखों से भगवान का दर्शन करना, यही आनंद लेना चाहता हूँ, भगवान का वो दिव्य स्वरूप. ये कोई ऑर्डिनरी मेटेरियलिस्टिक है, ये पगला गया है क्या है, भगवान को देखना चाहता है. अरे स्टॉक मार्केट पैसे ऐसे बनाओ, अच्छा ये करो वो करो, ऐसे बोलते नहीं. तो ये डिफरेंस है. आदमी का लेवल कैसे पता चलता है, उसका डिज़ायर क्या है, व्हाट इज हिज डिज़ायर. So Sanatana Goswami explains several meanings of Damodara in his commentary. One way to understand this name is in relation to Mother Yashoda. Sri Krishna wanted to relish Sri Yashoda's motherly affection. So he submitted to being bound by the rope of her. It thus became known as Yashoda Damodara, he whose waist is bound by Sri Yashoda. वात्सल्य भाव को जिताते हैं. वात्सल्य भाव को जिताने के लिए अपने आप को हार लेते हैं. He loses himself to make the Vatsalya Bhava win, to relish the Vatsalya Bhava. Another way to understand his name is Sri Radha. And Sri Krishna eventually reappeared after leaving the Rasa dance. He somehow pacified Sri Radha's anger. Rasa dance is very important to understand for Gaudiya Vaishnavas, because Rasa dance leads to Gopi Geetam. Gopi Geetam is the heart of the Gopis. So Rasa dance, the whole sequence you have to understand. If you want to do Vrindavana Parikrama, you should understand Rasa dance properly and then go. Vamshivat, how the Lord calls all the gopis in the night to Vamshivat. You can read in Krishna book also. Prabhupada ji has written wonderful. Now we have to focus on Ras Leela. No? We are all, a lot of time we have spent and we have deep Shraddha, Krishna consciousness. We have to read Ras Leela properly. So there is a Bhagavatam also you can read, with shloka by shloka. Because that is our Seva Kshetra. Finally, we are going to serve in the Ras Leela. Shri Rasa Mandale Yugala Sevaya Niyukta Kar. आपका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा गौड़िया संप्रदाय में? आपका अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? Your appointment will be in Ras Leela. Yugala Sevaya in Ras Leela, Rasa Mandal. In the Ras Mandal, you are going to serve the Yugala. But then if I don't know what is Rasa only, then it's a problem, right? We have to go deeper.
Of course, with full respect, we have to read properly, but we can read with the help of Prabhupada's pulpits. He somehow pacified Sri Radha's anger. One time this happened at Seva Kunja, and another time at Mansarovar. Just before they started the Rasa dance again, Sri Lalita and Vishaka tied Sri Krishna's yellow pitambara to Sri Radha's veil, binding them, making it impossible for him to escape. When Sri Krishna eventually reappeared after leaving the Rasa dance, reappear word is important here. He reappeared. He somehow pacified Sri Radha's anger. One time this happened at Seva Kunj, another time at Mansarovar. Every Purnima there is Ras. So one time it happened at Seva Kunj, another time at Mansarovar. Just before they start the Rasa dance again. So just because it doesn't, Lalita Vishaka ji क्या करते हैं? बांध लेते हैं पीताम्बर को घूंघट के साथ. So Shri Krishna's yellow pitambar to Radha's feet, binding them, making it impossible to escape. Another time when Sri Krishna was on his way to meet with Sri Radha, Padma somehow brought him to Gaurikund and united him with Chandravali. Meanwhile, Sri Radha's maidservants, headed by Sri Rupa Manjari, noted that Sri Radha was becoming increasingly anxious to meet with Sri Krishna. आए नहीं आज उस दिन पद्मा जी लेके चंद्रावली के ग्रुप में ले गए तो राधा रानी को एंक्शियस हो गया तो क्या होगा तो They began to search for him and finally found him at Gaurikund. Oh Aghari, they exclaimed, oh, a demon has entered Raja and is destroying everything. The demon was actually Sri Radha's separation from Sri Krishna. Because if Radharani's separation increases, she gets into Man. And Man means Krishna has to struggle to meet her. So as soon as he heard this, he spoke to Chandravali, comforting her, my dear one, I'll return immediately after killing the demon. Just wait for me. In this way, the Manjaris cleverly took Sri Krishna from Chandravali's group and united him with Sri Radha. They indirectly bolna padta hai. Manjaris should have a lot of intelligence, spying intelligence. See how he has to be announced in the Chandravali group. Krishna, this demon has entered Braja and is destroying everything. What is the meaning? Actually, Radharani is going to Viraha and that will lead to Man. So you be careful, you will also be destroyed. So these are all the hints. Manjaris का ना सब indirect भाषा में ही बात होता है क्योंकि डायरेक्ट भाषा तो बोल नहीं सकते. घर में भी when they are serving in Yashoda Bhavan, they are talking in indirect language. मैया cannot understand. उस दिन रात को कहाँ मिलना है सब प्लानिंग होता है ना और दोपहर को भी मिलना है. So all this is an indirect भाषा and indirect symbols, body language, ये सबसे बातचीत होता है. बॉडी लैंग्वेज देखे ना अपने न्यूज़ वाले पर वो तो वेरी एलिमेंट्री है मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड मंजरीज यूज लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. दे से इवन द डायरेक्शन ऑफ कृष्णास मोर पंख का कौन सा डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन और कुंज को इंडिकेट करता है कौन सा कुंज में आज मिलन होगा. सो ऑल दिस आर सीक्रेट. ऑन yet another occasion, Gurudev is giving 2-3 leelas here. And this leela also you study and meditate, it will expand in your heart. ये तो बस बीज रूप में दे रहा है. He is giving in the seed form these leelas. But in your meditation it can expand into a full 3-hour meditation. On yet another occasion, Sri Radha's friends tied the ends of her and Sri Krishna's cloth in a knot. To this day, the place where that pastime occurs called Ghantoli. It's because of all these pastimes Shri Krishna became known. Why Gurudev is telling all this? बांधना कहाँ बांध देते, इधर बांध देते, उधर भी बांध देते ना. उनका ये बोला ना कृष्णा, श्री कृष्ण does not vanish from the Ras Leela. तो ललिता विशाखा जी बांध दिया था घूंघट, राधा जी का घूंघट और श्री कृष्ण का पीताम्बर. So like that, that's Radha Damodar. Simply is not telling that he is bound to Radharani, but where all, which all leelas. Which I'll realize. See, here also the ends of Radha and Krishna cloth in a knot. This is the important line here. This has become Damodara. He becomes bound to Radharani. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, bada beautiful pastimes. These are the pastimes we have to increase now, hearing these kind of pastimes. Then only we can enter into Prajbhav. Right? So indicate this Radha Damodar. Damodar means one who is bound. यशोदा मैया का एक ही लीला है, लेकिन राधा दामोदर का राधा रानी को जब बाइंड हुए थे उसका तो बहुत ज़्यादा लीला है. 3-4 लीला ऑलरेडी गुरुदेव quoted here 3-4 लीलास, but दामोदर
Generally, now Damodara, Ananta Vishnu. Let's come to Vishnu now. Generally, Vishnu means the all-pervading being, right? विष्णु ಅಂದರೆ विशति ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಕ್ಕಿರೋನು ಹೊಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರೋನು सब चीज़ों के अंदर जो है वो विष्णु बोलते हैं सब चीज़ के अंदर विशति विशति मीन्स एंट्रिंग so all pervading thus it is understood that the sage is saying there is no place where you are not situated and no heart in which you do not dwell. You are everywhere. However, in his commentary, Sanatana Goswami has revealed another meaning of Vishnu. देखो ये I told you that day. जाता रति अजाता रति. जाता रति में जिसका रति डेवलप हो चुका है, वृंदावन रति, मंजरी रति डेवलप हो चुका है, वो कैसे सोचते हैं विष्णु नाम का अर्थ? How they think about the meaning of the Vishnu name, and how the ajata rati, one who is still in the tattva vichara, cannot be, still not matured enough to enter into lila vichara, how that person will think on Vishnu. So, this another meaning for the Jatarati. Sri Krishna eternally performs his confidential pastimes in all the secluded caves and grooves of Giriraj Govardhan. So, he is entering always the kunjas. That entering is all pervading in the kunjas. That entering is called, one who is entering the caves and grooves. That is Vishnu. Although even the demigods are unable to see Sri Krishna's pastime in those kunjas, he addresses the Lord as Vishnu. Vishnu, the deeper meaning of Satyavrati Muni's heart, that he is entering in those kunjas with the hope that he may see Sri Krishna directly. In your pastimes, you reside in every groove and cave throughout this Vrindavana. Therefore, you do not undergo any pain by traveling a long distance to appear before my eyes. The name Vishnu is used in a similar way in a verse from Srimad Bhagavatam. Vikriditam Vrajavadu Viridam cha Vishnu. In this verse, Vishnu refers to that Krishna who, with the desire to relish the gopis' love for him, sounded his flute and lured all the gopis from their homes. By pervading their hearts, he entirely won their love. So that pervading is Vishnu. He entirely won their love. Similarly, in Satyavati Muni's prayer, Vishnu refers solely to Brajendrananda Shri Krishna. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ದಾಮೋದರ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಸಡನ್ಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ವೈಕುಂಠ ನೇಮ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. He is still in the Vrindavana. His mind is in Vrindavana only. One who is entering into the kunjas, who is always present in the kunjas and the caves of, on the banks of Yamuna, the Govardhana caves, that is Vishnu. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಾತರತಿ ಅಜಾತರತಿ ಸಾಧಕ ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. Some of us also, we can, after chanting some, that I repeated, right? After chanting so many rounds, we can enter into Jatarati. You can do the Hare Krishna meditation. The meaning of the Hare Krishna will change. In the last 2 rounds, you can decide, I will chant Hare Krishna now with the Vrindavana meanings. Hara means one who robs the mind of Krishna. This is Radharani. Alva? Rama means Radhika Ramana. ತತ್ವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಲೀಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವತಿ ಮುನಿ ರೆಫರ್ಸ್ ದುಃಖ ಜಾಲಾಬ್ಧಿ ಮಗ್ನಂ. ದುಃಖ ಜಲಾಬ್ಧಿ ಮಗ್ನಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I'm oppressed by the miseries of material existence. For an incalculable period of time, I've been trapped in this vicious cycle of birth and death. Consequently, mistakes body to my actual self. ಅಲ್ವಾ? ದುಃಖ ಜಲಾಬ್ಧಿ ಮಗ್ನಂ ಅರ್ಥ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಪರಿತಾನಾಂ ಭಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಭು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರಿ ಓಂ.